if you can today deliver X result to your patient with a subluxated cataract, with femtosecond laser, you'll probably push your boundaries further. If I have 10 surgeries or 10 phacos in a day, I may do the first and the second exactly like a femtosecond machine, but probably the 8th or the 9th may not be as exactly how it is the first or the second. The first question they would like, oh, it's laser, is it going to affect my body? हम यहाँ पे microns के बारे में बात कर रहे हैं. It doesn't reach even up to another 2-3 microns away from where it's supposed to fire. You can actually look at a cut section of the eye live, and then you can set the levels at where you want the laser to be fired. It just doesn't make coffee. Everything else it does. Hi, Dr. Tanvi. It's so good to have you here. My pleasure. I have, had so many conversations with you over the course of few years. We've had discussions about cataract refractive surgery. We share common interests, and we keep talking about all these things that we hear in conferences and the updates on newer technologies, their applications, our clinical challenges when we meet in conferences, when we bump into each other in the hallways, after sessions, between sessions. So I thought that, we should also have a conversation where we actually share with the audiences what our experiences about the latest in cataract and refractive surgery is. So in that regard, I am going to conduct this podcast with Dr. Tanvi. Dr. Tanvi Haldipurkar is a prolific surgeon, and I personally admire her for her meticulous attention to detail. She is very particular about knowing the technology in detail, knowing its side effects, knowing its limitations, and she wants to be always precise and accurate. She has a long legacy of 40 years. I think more than 40 years, and I think that experience and that legacy is something that she is strongly carrying forward. So, Dr. Tanvi, welcome to the podcast. This is my first in this series, and I'm very happy that I'm doing this with you. Because I'm happy because I've learned a lot from you. You have also been one of the teachers in this journey with Zimmer for me. So thank you, and too much generous introduction. But I think we are all very excited and very happy users of Zimmer. So I'm glad that we are doing this so that we can kind of share what is it that this great machine does to everybody. Yeah. So, but before we start with Zimmer, I just want to ask you, when it comes to robotics or, like femtosecond laser, how do you describe the use or the utility or the advantage of doing a femtosecond laser assisted surgery, be it anything, LASIK, cataract, lenticule surgery, whatever, to your patient compared to the previous technologies that we have been using, say phaco or microkeratome LASIK, or lenticule is not possible without femtosecond laser. So how do you explain to your patients, like how do you start the conversation? So it is a very valid question, and it's an obvious question in every patient's mind. So what happens is our institute has been there for the last 40 years. My father has been, operating, and he's a good surgeon. I think if you, so everybody knows that. So there was even a point in our minds for many years as to why do we need a femtosecond machine. We felt that, we were delivering as good a result as a femtosecond laser. I mean, we would expect that, yes, rhexis needs to be centered, needs to be circular. If you see the rhexis that we were giving, it was fairly circular. So this was a question in our minds, forget the patients, as to why do we need to come to a femtosecond laser. But the minute we did that shift, I think there were a lot of questions suddenly, or the perspective changed in our minds. And that's something that I'm hoping that the patients get. So when they come to us, there are many things I explain to them or give them or make them understand why this machine is better than our hands. But there's something that I tell to every patient, and that is,
if I have 10 surgeries or 10 phacos in a day, I may do the first and the second exactly like a femtosecond machine, but the rex is exactly a 5 millimeter. But probably the 8th or the 9th may not be as exactly how it is the first or the second. And that's something which is a difference between a machine and your hands. That's just one aspect of the femtosecond laser. There are several others which in the new updations that are coming up over time, we'll realize that the amount of precision that the machine gives, and also because of the safety. So there are some steps which are done by the femtosecond laser. When I'm talking about cataract surgery, these are important steps if done in an unopened globe. You've spent that less amount of time once you enter in. You've kept the endothelium much more, untouched. And at the end of the surgery, probably the next day, the eye seems to be much more calmer. So if you compare it just head on, there are definitely many benefits, and especially also in the long term. Fortunately, we are in the era, I mean, probably it was not so 10 years back when the machines were still in their infancy stage and they were just coming up with different energy settings and the pulses or whatsoever. But now, at least with the Zima, we have very precise pulses being delivered with low inflammation, and you can tell that yes, this is what you will get and the machine delivers it. Perfect. In fact, you raised a very valid point, doing things in the closed globe. That's something that I don't emphasize enough to my patients. So usually what I tell my patients is that, I have written you a letter and I will write the same letter to 10 other people, and every letter will be different. Like my writing, the setting of the lines, the spacing, everything will be different. But if I type that letter and give it to 10 persons, it will be exactly the same. So it's just like saying that, my handwriting is very, very good. And that is why I don't need a computer Correct. or a printer, because my handwriting is so good that everybody understands my handwriting. Correct. But it doesn't replace the computer still. Correct. So I think that's a very simple way to explain to your patients. And you raised a very valid point. In fact, I also saw this happen, that my father is a great cataract surgeon. So he was delivering good results. So femtosecond laser did not really add to the quantity of vision to the Correct. patient, but it opened so many arenas where you can deliver better results, more precise results, safer results to your patients. For example, in fact, there was this conversation I was having with another doctor who said that, will robotics or automation in cataract surgery not decrease my skill of being able to handle a complicated cataract? So my answer to him was that if you can today deliver, say, X result to your patient with a subluxated cataract, with femtosecond laser, you'll probably push your boundaries further, push your skills further to reach a point where you can deliver X+1. Even better. True. So why are you limiting yourself and saying that, femtosecond laser did this for me, so that is the end of the surgery for me? You push yourself to deliver even better results. Yes. Use it as your third hand. So I think another way to put it is, if you say that if you remove the cost out of the equation, would you do it? And I think mostly people will say yes. It is a limiting factor, there's no doubt about that. But today, in the era of technology, if you say that you want to be restricted and not use the new technology that's coming up, I think you are kind of limiting yourself. So we've done cataracts in very complicated cases where there's vitreous in the anterior chamber, a subluxated cataract, a PPC, which has a open bag at the open posterior capsule. And these have all come out with a much more predictable outcome. So we know that, as cataract surgeons, there are some cases where there is a little lower prognosis, or, you tell a patient that we are going to try our best, but let's see how it goes. But definitely there's an added level of safety that's come up with Zima or any kind of femtosecond cataract module, because now you can, put those levels of safety into the surgery. Obviously, the OCT, that's the imaging that's come up into the machines, also is something which is helping us navigate that path. You can actually look at a cut section of the eye
live intra-op, and then you can set the levels at where you want the laser to be fired. So I mean, it's an era I'm very excited to be in. So to put it in a simpler language and in Hindi, जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आँख में जो काम करने वाले हैं वो करने के बाद ये देखें कि ये कैसा हुआ है, कट लगाने के बाद देखें कि वो कहाँ लगा है, किस साइज़ का लगा है, उसको मेजर करें। उसके बजाय हमारे पास Zimmer Z8 जो मशीन है, जो रोबोट है, उसमें ये सुविधा है कि हम एक्चुअली पहले ही आई के आँख के क्रॉस सेक्शंस लेकर पहले ही ये देख लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। इनफैक्ट जो मशीन है उसी के अंदर एक समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एक मशीन लर्निंग है, जिसके थ्रू वो ही हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें जो सर्जरी के सारे स्टेप्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं सर्जरी के, कैटरेक्ट सर्जरी की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी सही जगह पर पोजीशन करके हमें बता देती है कि भाई ये कट यहाँ पे लगेगा, इस साइज़ का होगा, इस डेप्थ का होगा, ये गोल आकार का कट होता है हमारा रेक्सिस, वो एग्जैक्टली सर्कुलर होगा, परफेक्टली सेंटर्ड होगा, इस साइज़ का होगा। आप उसे मॉडिफाई करना चाहें तो पहले से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली सर्जरी का जो प्रिडिक्शन है या रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर तन्वी, थोड़ा बहुत हमारी जो ऑडियंसेस है वो हिंदी में भी जानना चाहती है चीज़ें, तो हम मिक्स्ड इंग्लिश में डिस्कस करेंगे आगे। तो बेसिकली मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप माइक्रोकेरेटोम लेसिक करते थे और अब आप Zimmer Z8 पे शिफ्ट हुए, तो इन दोनों के बीच में यूजुअली क्या होता है, लोग कहते हैं कि जब हम फेम्टोसेकंड लेज़र पे शिफ्ट हुए ना तो रफनेस आ गई, इनसे मतलब फ्लैप खोलने में दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। पर मैंने पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस करा, मैंने 3-4 फेम्टोसेकंड लेज़र्स इस्तेमाल किए हैं पास्ट में, पहले अपनी ट्रेनिंग में एम्स में, फिर उसके बाद यहाँ पर जब मैं रूप नेत्रालय में गया तो वहाँ पर डिफरेंट मशीन थी, फिर वो मशीन चेंज हुई, तो मैंने 4 डिफरेंट लेज़र्स का इस्तेमाल किया है। पर Zimmer Z8 का जब मैंने फ्लैप लिफ्ट किया पहली बार तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऑलमोस्ट उतना ही स्मूथ है जितना ब्लेड का होता है। बाकी फेम्टोसेकंड लेज़र्स में काफ़ी मेहनत लगती है, रफनेस भी रहती है, चिपचिपा सा होता है फ्लैप, तो उसके जो कट हैं वो इतने अच्छे क्यों होते हैं, उसको हम सिंपली कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने पेशेंट को? सो बेसिकली पहले तो ये बताऊंगी कि लेसिक में हम ब्लेड से कट करते हैं। सो इमेजिन करें कि आप नाइफ लेके किसी चीज़ को काट रहे हैं, अब वो तो एकदम ही इट विल बी स्मूथ, तो वो बेंचमार्क लेके बहुत सारे सर्जन्स फेम्टो के साथ ले जाते थे और उन्हें लगता था उसी तरह से वो होने चाहिए। मगर ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको पता होनी है कि फेम्टोसेकंड लेज़र फ्लैप किस तरह से बनाता है। सो जो लेज़र है इट इज़ फायरिंग स्मॉल पल्सेस, और Zimmer के तो मशीन में बहुत मल्टीपल पल्सेस छोटे छोटे पास में आते हैं, और इमेजिन करें कि वो एक छोटे छोटे एयर कैविटीज़ है और वो सारे जो ओवरलैप हो जाते हैं तो वहाँ एक सॉर्ट ऑफ स्मूथ सरफेस बन जाता है जो हमें अंदर जाके सेपरेट करके उठाना होता है। अब हर मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स, हर मशीन का एनर्जी अपडेशन अलग है। आपके मशीन का अलग था, मेरे मशीन का अलग था। अब हर सर्जन समझता है कि जब मशीन आ गई वो मशीन मैं यूज़ करके सब पहले दिन से ठीक होना ज़रूरी है, मगर वो नहीं होता। बिकॉज जहाँ वो मशीन है, जिस तरह का वो हॉस्पिटल है, जिस तरह की जगह है, अब मैं साउथ में थोड़ी सी हूँ, आप नॉर्थ में हो, दैट टेम्परेचर इटसेल्फ इज़ गोइंग टू चेंज। सो पता नहीं मुझे बाकी मशीन्स के साथ किस तरह से वेरिएशंस करना पड़ा, मगर आई रियलाइज दैट विथ एनी काइंड ऑफ फेम्टोसेकंड लेज़र थोड़ा सा पहले उसमें अपनी जान डाल के उसे थोड़ा मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड आउटकम। बट वो शायद एक पहले 3 या 4 केसेस में ऐसे करना महत्वपूर्ण है। एक बार वो हमने कर दिया, उसके बाद दैट मशीन डिलीवर्स एंड इट डिलीवर्स एवरी सिंगल टाइम। मगर वो इनिशियल स्टेज अब वो भी थोड़ा ईजी हो चुका है as compared to the past, because the entire global experience has been taken, and uske upar fir the technicians have started working and they help us out. But the advantages I want to say jo ki mujhe LASIK doing LASIK with a femtosecond laser versus a microkeratome मुझे जो मिला है वो कि कोई आँख ऐसे होती है वो जो बहुत छोटी रहती है। समटाइम्स
एकदम अंदर रहती है, एक तो आँख किसी किसी की एकदम से ऐसी रहती है एंड देन देयर फोरहेड्स आर क्वाइट फार्दर आउट. द मशीन असेंबली ऑफ अ माइक्रोकेरेटोम इज़ ह्यूज. अगर किसी ने उसका फ़ोटो या वीडियो देखा हो, वो बहुत बड़ा है. अब उतने से छोटे आँख में पहले तो हमें स्पेक्यूलम लगाना है, आँख को खुला करना है, फिर उसको जाके वहाँ रखना है, फिर इमेजिन करना है कि वो पूरा वहाँ से यहाँ जाके वो फ्लैप बनाएगा. इट इज़ रियली स्कैरी. एंड आई हैव हैड वन पेशेंट जो कि वो बीच में जाके अटक गया बिकॉज वो जगह ही नहीं थी उसको गुम होने को. सो ये सारी चीज़ों को अभी नेविगेट करना विथ फेम्टोसेकंड लेज़र हैज़ बिकम सो मच मोर ईजियर. कस्टमाइज़ कर सकते हैं. यही मुझे ये मशीन के बारे में बहुत पसंद है कि अगर यहाँ मुझे लगे कि थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ वो फ्लैप को, उसके हिंज को इस तरह कर दूँ. सो एक बार डॉक करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ गेम चेंजर. तो बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है. जब हम ब्लेड से लेसिक करते थे तो हमें दो चीज़ें हमें सिखाई भी जाती थी, पढ़ाई भी जाती थी, थोड़ी बहुत हमने देखी भी होती हैं. एक बटन होलिंग और एक फ्री फ्लैप. तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. पर इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. जैसे मैम ने अभी बताया कि ब्लेड जो है वो बीच में चलते चलते रुक जाएगा. अब क्योंकि वो मैकेनिकली रुक गया है, वो आगे नहीं जाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए. तो अब आपने वो सर्जरी बीच में अबॉर्ट कर दी और अब आपको नहीं पता कि अब इसका क्या करें. अब आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा. पर जब आप फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड फ्लैप की बात करते हैं तो फेम्टोसेकंड लेज़र स्पेशली Z8 में पहले एक इंट्रा ऑपरेटिव OCT होता है. वो OCT आपको एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ पर फ्लैप बनेगा, किस साइज़ का बनेगा, किस पोजीशन पे है, किस लोकेशन पे है. आप उसका साइज़ बदल सकते हैं, उसकी लोकेशन बदल सकते हैं, उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं. और जब आपने एक बार उसको वहाँ सेट करके फायर कर दिया तो वो बनेगा ही बनेगा और एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा आपने उसे प्रोग्राम किया है. एंड ये प्रिडिक्टेबिलिटी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए. सो आई थिंक it's a great tool, having intraoperative OCT in your femtosecond laser for making a flap is something that is there only with Z8. Yes. There is no other platform that I know of जिसके अंदर कि आप इंट्रा ऑपरेटिव OCT कर सकते हैं डॉक करने के बाद और ये देख सकते हैं कि फ्लैप कहाँ कैसा बन रहा है. एंड फिर भी उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं अगर ऊपर जाना है, नीचे जाना है. सो इट इज़ लिटरली लाइक अ जिगसॉ, है ना. बिकॉज हमने अगर फ्लैप मार्जिन्स भी इस तरह से बनाए कि वो एंगल हो, इस तरह से हो, तो वो उठेगा भी वैसे ही और जाके वहाँ ही बैठेगा. करेक्ट. एंड आई थिंक जैसे कि आपने जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह रहे थे कि बटन होलिंग है, देयर इज़ अ फ्री फ्लैप या रिंकलिंग जो कि मोस्ट कॉमनली हम देखते थे विद अ ब्लेड. A lot of these are not seen anymore. So even I think again the factor boils down to cost. अगर मैं अपने पेशेंट को बोलूँ आपके पास फ्री कर दूँ मैं तो आप कौन सा ही चूज़ करोगे या मैं कौन सा चूज़ करूँगी. एंड दैट वुड डेफिनेटली बी अ फेम्टोसेकंड लेज़र. सो आई थिंक जो आपने बात कही कॉस्ट की, अब हमारे पेशेंट स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो रियलाइज़ कर रही है कि हेल्थ की जो कॉस्ट्स हैं दे आर साइजेबल. बट इफ़ यू कंपेयर इट, आप उसको ये देखें कि अगर किसी के साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो कितनी कॉस्ट बेयर करेगा अपनी लाइफ में, तो आप रियलाइज़ करते हो कि ये मिनिस्क्यूल है. Isn't it worth it? तो मतलब अगर आपको 30% एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ रहा है अपनी लेसिक के लिए, आप चूज़ यही करोगे कि आप उसको रोबोटिक फ्लैप ही करो. बिकॉज आप ये जानते हो कि रोबोटिक फ्लैप में आप सेफर हो. तो अगर 100 में से किसी एक के साथ ब्लेड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो वो चांस भी क्यों लेना है. तो बेसिकली आई थिंक जब हम कॉस्ट का फैक्टर देखते हैं तो पेशेंट्स को ये समझने की भी ज़रूरत है या हमें ही एक्चुअली हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम पेशेंट को ये समझाएं कि देखो आज आप 20,000 रुपये या 25,000 रुपये फालतू खर्च कर रहे हो, 30,000 रुपये फालतू खर्च कर रहे हो, पर कल को आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आप आज ये सेफली अपनी दिल की धड़कन को शांत रख के यहाँ पर लेट सकते हो कि ये ब्लेड जब चलेगा तो ना मेरी धड़कन बढ़ेगी ना तुम्हारी धड़कन बढ़ेगी. हमें पता है हमने जो प्रोग्राम किया है वही होना है. जबकि जो माइक्रोकेरेटोम लेसिक है उसमें स्टीप कॉर्नियाज जो कॉर्नियाज बहुत ज़्यादा स्टीप होते थे या जैसे आप बता रहे हैं ऑड साइजेस, उसमें हमेशा दिल की धड़कन तेज रहती है. किसी ने हमें मेरे मैप करे होते बीपी तो दे इट वुड हैव बीन आउट ऑफ कि वो जब चल रहा होता है तो आपको ये लगता है कि अब ये होगा पूरा नहीं होगा, कैसा दिखेगा बाद में हो जाने के बाद. अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाज नॉट समथिंग एनीबॉडी वांट्स.
करेक्ट। एक और चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी Z8 के फ्लैप्स में, वो ये थी कि इनका, क्योंकि जो ये लो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, लो एनर्जी ओवरलैपिंग स्पॉट्स जो आपने बताया, उसके वजह से जो फ्लैप का इंटरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। और कंपेयर टू जो मैं पहले यूज़ करता था, तो मैंने बेसिकली FS200 यूज़ करी है पास्ट में, फिर मैंने इंट्रालेस यूज़ करी है, और मतलब ये जो ओल्डर जनरेशन वाली मशीन्स हो गई बेसिकली, लेंसएक्स भी यूज़ करी है। तो बेसिकली इन मशीन्स में बड़े लेज़र स्पॉट्स आते थे जो गैप्स के साथ होते थे। और अब जो बेसिकली जीमर Z8 या जीमर का जो बेसिकली USP है वो ये है कि लो एनर्जी ओवरलैपिंग स्पॉट्स हों, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए एक स्मूथ कट के। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि बेसिकली जब हम ब्लेड से कट कर रहे हैं तो जो कट का जो इंटरफेस है या जो एज है वो तो स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें ये प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि वो कट जिस जगह पर लग रहा है वो परफेक्ट है या नहीं है, या जिस एंगल पे लग रहा है वो परफेक्ट है या नहीं है। यहाँ पर हम लेजर से उस पेपर को कट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम माइक्रो होल्स बना बना के उन सारे होल्स को जोड़ दे रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि ग्रॉसली देखें तो पोस्टल स्टैम्प के जो टेयर्स होते हैं जैसा होता है, बट अब जीमर Z8 के साथ क्या हो गया कि वो छेद अब अलग अलग नहीं है, वो छेद भी एक के ऊपर एक कंटिन्यूअस हो गए, तो इट इज प्री कट, हाँ, इट इज अ सिंगल लाइन बेसिकली। तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी या समझ लीजिए जो कमी थी पुराने फेम्टोसेकंड लेजर्स की, रफनेस की, वो Z8 ने खत्म कर दी। आई थिंक ये एक Correct, absolutely. And again, that also I feel depends a little bit on the way you've modified the energy settings. But once you have hit that sweet spot, this is exactly how it delivers. Post surgery, the patient is, ज़्यादा जो सूजन होती है कभी कभी, या इमीडिएट जो पेशेंट को विजुअल आउटकम जो उसको एक्सपेक्टेड रहता है, वो पहले शायद नहीं होता, लेकिन अभी इट डिलीवर्स एवरी डे। सो बेसिकली आई थिंक जो आप कह रहे हो वो ये है कि जब भी आप कोई नई मशीन या नई चीज़ लेते हैं तो आपको उसको समझना, उसकी सेटिंग्स को सही करना, करेक्ट, इसका एक लर्निंग कर्व है। हाँ जी। तो मतलब आप लेके कूद जाओ और फिर ये कहो कि जी ये मशीन तो उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं पहले कर रहा था। तो आई थिंक that's not fair to the machine or to yourself। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत लोग करते हैं। ये बेसिकली आई थिंक मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये बेसिकली ने सेयर्स और ये सेयर्स के बीच का डिफरेंस है कि जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा जो चल रहा था वो बढ़िया है, वो फिर नई चीज़ को पहले ही डिसडेन के साथ देखते हैं, पहले ही उसको ये सोच रहे होते हैं कि ये तो अच्छी नहीं होगी क्योंकि हम तो ऑलरेडी इतने अच्छे थे। एंड आई थिंक फिर वो लेट अडेप्ट करते हैं। एक्चुअली सच्ची बात ये है कि वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो मशीन अडेप्ट ही नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे और थोड़ा too late to the game। बेसिकली फिर वो हमेशा उसको ये कहते रहेंगे कि ये तो अच्छी नहीं है। इसी सिलसिले में मेरा एक और सवाल है, ये जो लो एनर्जी फेम्टोसेकंड लेजर और ओवरलैपिंग स्पॉट्स है, आपने जीमर के बारे में आप जानती हैं, कब लेके आए थे ये लोग इसको? The low energy, I think a long time back, because कोई colleagues मेरे हैं जिनके पास एकदम से पुराना जीमर था, and they said that this energy portfolio has always been there. It's just that अभी तो it's been few years since I've had Z8, so maybe 10 years. 10 years. So basically एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ था अभी कुछ 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब बाकी फेम्टोसेकंड लेजर्स ने ये लो एनर्जी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। आई थिंक आपने भी थोड़ा बहुत देखा होगा। तो बेसिकली सब ने ये क्लेम टू फेम किया कि हम लेके आए हैं लो एनर्जी ओवरलैपिंग स्पॉट। तो बेसिकली लेसिक में मुझे यही लगता है कि ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर इन्होंने ऐड किया, लो एनर्जी लेज़र का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, इसने लेसिक के फ्लैप को बहुत अच्छा कर दिया। तो बेसिकली हमें जो ब्लेड के एडवांटेजेस हैं वो भी मिल रहे हैं, कि जो स्मूथनेस थी वो भी है, इन्फ्लेमेशन नहीं है जो आपने कहा, जो बेसिकली हायर एनर्जी फेम्टोसेकंड लेजर पल्सेस से आसपास का कॉर्निया डैमेज जो होता था वो नहीं है अभी, कोलैटरल डैमेज जो होता था वो नहीं है, प्लस साथ में आपको जो प्रिडिक्टेबिलिटी एक ऑटोमेशन या रोबोटिक्स से मिलती है वो भी मिल गई। तो Z8 की लो एनर्जी लेजर का जो कॉन्सेप्ट है ये एक यूनिक और USP है एक्चुअली, जिससे हमें ये दोनों एडवांटेजेस मिलते हैं। अदरवाइज इससे पहले के जो फेम्टोसेकंड लेजर्स थे वो बेसिकली आपको दे रहे थे प्रिडिक्टेबिलिटी, बट थोड़ा
इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा पैदा कर रहे थे, या थोड़ा सा मतलब डाउन साइड भी था उनका, Correct. जो कि ये विद टाइम या मतलब 10 साल से तो एटलीस्ट हमारे पास लो एनर्जी लेज़र है जीमर का, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई. करेक्ट. एंड सिंस दैट जो कि वो ऑप्टिक्स इतना आंखों के पास जाके काम करता है, बिकॉज उसके जो द वी नो इन फिजिक्स कि अगर वो ऑप्टिकल लेंथ कम हो जाए तो द स्पॉट साइजेस आर इवन मोर नैरोअर एंड यू कैन गेट मच मोर ओवरलैपिंग स्पॉट्स. एंड इस वजह से जो इन्फ्लेमेशन या सेल डेथ जो होती थी अराउंड इन द कोलैटरल टिश्यूज, that is not there anymore. Yes. Basically, talking about this low energy overlapping spots and the optics behind it. In fact, I read a paper which was published by the Singapore National Eye Center. Yes. And they actually showed Yes. that, there is virtually no keratocyte death Correct. in the planes of the lamellae of the cornea that are above or below the point where the cut has happened. Correct. So it's actually so amazing that Yes. you are actually passing a laser through, Yeah. and it's not damaging Yeah, anything 10 microns below Correct. or 10 microns above where it is actually acting. Yeah. So it's actually Amazing. I mean, for our patients to understand, the first question they would like, oh, it's laser. Is it going to affect my body? That's the question. हम यहाँ पे microns के बारे में बात कर रहे हैं. It doesn't reach even up to another 2-3 microns away from where it's supposed to fire. And that precision is not for every laser. It's not with every femtosecond laser. We know this term, which is collateral damage. Yes, that the damage is very little in most other lasers, but even that has not been documented with the Z8 system. And there are animal studies which are proving this. So it's amazing, the way the precision and safety has come out. So, there was this big debate a few years back, maybe a couple of years back. So, when other platforms of femtosecond laser actually realized that, the Zeemer was successful because it was using the low energy laser concept, and everybody else was on the higher energy and non-overlapping spot Correct. concept. And then suddenly everybody jumped and tried to reduce their energy, bring the spots closer. Some succeeded, some didn't. And then whenever they came into the market, they said that, we are the ones who've brought this thing out. This is the new thing. This is the latest thing. And everybody is buzzing with it. The whole place is just like a marketplace, like suddenly... Mine's better. Yeah. So suddenly the science and the ophthalmology Yeah. turned into like kind of a marketplace where everybody is, selling their thing. And I was sitting there and thinking that, this thing has been around for more than 10 years. And the person because Frank Zimmer, Yeah. who basically founded Zimmer, is an engineer who actually conceptualized and started this thing, built his team, built the laser. Yeah. And that person is nowhere to be seen. But I think that's great. It's understated, elegance, and that's what I like. Actually, you are right that most other companies have come up to that level that everybody is as good as the other, and I think that's great. It's good to be inspired by the other, machine as well. And I'm hoping because today we need to reach a place where nothing is saying that I am better than you. I think each of them have to reach that stage where each machine should give the safety, the precision that a patient deserves, because at the end of it, we are not going to take one machine over the other just because you have some allegiance towards one company or not. It's at the end the patient's eye that's being operated on, and I'm glad that these companies are being inspired for whatever reason that it may be, but they should deliver the the lowest amount of collateral issues that the machine can give, and the patient a good visual outcome. At the end of the day, that's all the patient wants. And I think this is also a process that the machine engineers or the Yes. companies would go through. So it's not something that gets done in say 2 months Yes, or 6 months or 1 absolutely. year. It's also a Years, continuous learning correct. process. So when we talk about the low energy laser concept, Zeemer has pioneered it for many years and improved it over a course of time and brought in so many new applications as well. Yes. So, moving on, I want to discuss with you the lenticule surgery Yes. that Zeemer pioneered. Again, we were doing SMILE and we were getting great results.
But then there were a few limitations that we used to face with the initial smile procedure, correct. like the visual axis centration or Cyclotorsions. cyclotorsion compensation. Also, like the docking used to be a little Learning curve again, was much higher, yes. you have to train your patient, and keep talking to the patient, and you are at the risk of losing the suction. In fact, so much so that they actually brought a software Yeah. to rescue Yeah. all those cases where the suction would break. Correct. And then Zimmer came. They made many improvements to that. So can you just like go back a few years and can you just, for our audiences, tell us how the scene changed when we moved from smile to clear? Yeah. What are the changes that were brought, and how are they important to the patient? So, I mean, initially, when I was doing my refractive fellowship, even I have done smile first, and then for almost a year or so, I didn't do any lenticule procedure because we didn't have any femtosecond laser. And then when Zimmer came to us, that's when we wanted to start doing. Right. And I'm sure you know because I've asked you many questions about Yes. it. But my initial experience was obviously not as great as I expected it. But that was something that was my doing. I hadn't optimized the machine as I should have. And like I was explaining, that I expected, oh, it's supposed to do this, and that's not what was happening. But at the end of the day, like I said, the way you change the machine's settings, the power, and customize it in a way, at the end of the day, the concept is you have to make a lenticule, you have to safely take it out, and that's what's going to give the visual outcome. So today, Zimmer has reached that stage where you can customize the way the lenticule is made. You can put a Q value. So the kind of modifications that you can do with the lenticule is something which is very interesting, and I don't think that's there in Smile, or you can't really customize it accordingly. Correct. And there are so many different ways you can, as in for the right eye as well as the left, how you can customize is also something I really like in Zimmer. Depending on how the first eye reacted, do I need to make little more venting channels? Do I need to reduce the energy in the other eye? But the way the smoothness was after the initial one or two, it was quite similar to Smile, because I don't have any other experience, or if not, probably I would say even smoother. So, initial few cases, patients may have had a recovery after a week or so, but then eventually you reached a phase where patients were getting great vision. So, in fact, the thing that I liked the most about moving from Smile to clear was the cyclotorsion aspect. Oh, absolutely. I'm not even considering that, because it's so customizable. The minute you dock it on the eye, you can move it however you want. And that's something which I feel that is probably not there in any other machine. The minute you apply suction, nothing changes in any other machines. Whereas over here, you can do a lot of changes on that screen after you've, applied the vacuum. And the vacuum being so good that even if you fumble around for the next half a minute or a minute, it's not really going to be lost. So it is that versatile. You can move about and do. Yeah. So, you so easily said that it's not there in any other machine, but actually the truth is now Every machine has it. the fortune. They want to do and that. when it came out, it was such a great thing for the Yeah. surgeons. But, Zimmer being Zimmer, they were like Understated. like you said. So Swiss, smart, but, gentle and understated. So just like their laser, they were also very silent. Yeah. Not making Not much a noise. noise. And then I realized that when others came up with this, they had a huge buzz about it because they knew the importance of it. Yeah. Everybody knew the importance of it, but they were very smart in, putting it across to the audiences. Yeah. And that is one of the reasons why I wanted to discuss this with you. Because we have been using it for the past 3 years. And other machines adopted it after understanding how to do it, probably Yeah. by seeing how Zimmer did it. And then they said that we are the ones who've brought in visual axis centration. We are the ones who brought in like Central line. yeah, all those things. So those things or those marketing terminologies may be different for different Yeah. machines, but it is actually clear that changed the path of lenticule extraction surgery. And like everybody else now shifted. So today it's like
It's like a integrated thing in every Yes, machine. Yes, and fortunately, in the future with Galili that's coming up, everything is even more, going to be more seamless. Yeah. So in fact, I saw. I was actually interacting with a doctor who's actually doing Galili already. Okay. And they were very happy because they don't have to touch the eye at all. It's on the table that the first drop of anesthetic is Okay. put. So it's just like pristine eye that Yeah. undergoes contact with the basically the interface. laser exit window. So yeah, the patient interface. And I mean, the centration is taken up by the iris mapping, I'm assuming, and Yes. the curvatures are already mapped by the topographer, and everything is so. There's no human error involved, wherein you may enter a wrong reading for a curvature or even the pupil size. Everything gets logged in from the machine onto the laser platform, and it does its work. So I would like to go back to the basic now. I want to basically put it out for our audiences. What is the difference between doing a lenticule surgery and a flap-based surgery? Number one. Number two, I want you to simply tell how would you convey it to a patient that lenticule surgery has this advantage and this limitation. So just compare it and just tell us that why would you prefer to do a clear in a patient and not do a LASIK. femtolasic? So today, in my clinical practice, I have sort of unequal affinity towards both these procedures. But there are some patients who I would prefer LASIK, and some I would prefer a lenticule, and I'll tell you in a bit why. So essentially, the surgery is such that in LASIK, that we make a flap. So there is almost a 350 or 340 degrees of a cut, and the flap is up, and then the excimer laser does it. So today there are excimer laser profiles which are able to target a few of the higher order aberrations as well. Correct. And there are eyes which pre-existingly have very higher order aberrations. Correct. And those may be the ones I will choose to do a LASIK, because until now lenticule doesn't really come up with a way to target these higher order aberrations, but Correct. I'm sure in a few years or so it may come up to that. But those would be the patients I want to do a topography guided LASIK. And then there is a huge subset of patients that are now coming up with increasing dry eye, preoperative dry eye. Right. So there are, I think in our everyday patient population, almost 80 to 90% of them have some symptom of dry eye. And what is the primary reason for that? Oh, I mean, screen use. So post-lockdown, I think things have just changed. We have patients coming in saying they have 12 hours of screen use, and I wonder when do they eat or sleep. Yeah. But that kind of use is extremely dangerous to the eye, and we don't realize it, but our surgery just takes them to further underground. The baseline just goes under the negative. Yes. And we know LASIK gives that big cut. We know that it does have the corneal denervation, and that is going to increase the dry eye a little more than versus a lenticule procedure, where my dry eye profile will be much, much better. So somebody who is in that sort of a IT profession, somebody who is going to be bothered, already has a pre-existing dry eye, I will choose a lenticule procedure over that. So for all you guys there, when we look at your maps and we ask you to come up, get yourself worked up pre-operatively, our purpose is two. Number one, we want to check the safety of a laser procedure for your eye. That is primary. But also we have the option of choosing the best procedure for you. So we can choose a femto-LASIK, or we can choose a lenticule surgery based on your dry eye profile, your profession, your visual needs, and your higher order aberrations. So there are a lot of doctors, there are a lot of surgeons who would say that, everybody should go for this procedure. This is the one procedure that is the best for everybody. There is no best. It's literally like matchmaking. I have the role of a matchmaker, I tell them, because every eye is not suitable for one or all of them. So fortunately today we are at that cusp of technology where any eye will undergo one or the other surgery. Yes. It is very rare to say that, oh, you are unsuitable for anything. But then that doesn't also mean that, oh yes, smile is the best for you, clear is the best for you, LASIK is the best for you. No. Some patients, so I have operated a patient who had a minus 34 number. Would you ever imagine doing a LASIK or a clear in that? Course. So then there are
options like a phakic lens, which will give them absolutely great vision. And so you need to, as a refractive surgeon, do these background checks, look for that dry eye, look for the topography, understand whether the biomechanics is strong or not, and then choose a procedure which will kind of sustain that patient over the next so many ever years that he's going to live. Perfect. So basically, if I look at my patients, I see that around 70-80% of them don't have significant higher order abrasion. And like you said, dry eye is much more common. Correct. So I always err towards a flapless surgery. Correct. And whenever I see a higher order abrasion, which is more than what I would tolerate, which is basically 0.3 or so, yeah. So 0.3 RMS is basically our 0.3 micron is our cutoff. And I see that most of them lie under that. And another thing which I notice is that high astigmatism. Yes. Although, we have the cyclotorsion correction and everything, but they tend to have higher order abrasions more than the others. So pure astigmatism. And of course, hyperopia, which is still not there with us. Yeah. So those are the kind of situations where I would definitely go for a flap-based procedure. But then 70 or 80% of my patients would do well with a lenticule-based procedure. And also the ones who have like any contact sports, or somebody who cannot undergo a flap, for example, for whatever they may, some army or some eligibility criteria for government services, they don't allow a flap. So having a flapless procedure serves them better. Perfect. तो बेसिकली हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम पेशेंट के लिए क्या प्रोसीजर चूज़ करें, तो हमें ये देखना है कि उनके हायर ऑर्डर एब्रेशंस कैसे हैं और उनकी ड्राई आई प्रोफाइल कैसी है, और उसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लें कि हम लेंटिक्यूल सर्जरी करेंगे या लेसिक करेंगे. और लेसिक का जो मेन पर्पस है या मेन फ़ायदा हमें मिलेगा वो हायर ऑर्डर एब्रेशंस में मिलेगा, जो एक रेयरिटी ऑफ मतलब लेसर परसेंटेज 10-15-20% पेशेंट्स में मिलेंगे हमें, और ड्राई आई हमें ज़्यादा कॉमनली मिलेगी. तो बेसिकली ड्राई आई को एड्रेस करने के लिए फ्लैपलेस सर्जरी, और उसमें बेसिकली लेंटिक्यूल, और लेंटिक्यूल में क्योंकि क्लियर इतना अच्छा परफॉर्म करता है, सारी चीज़ें एड्रेस करता है, विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन करता है, साइक्लोटॉर्शन करता है, तो बेसिकली उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी और क्यू वैल्यू जो आपने बोला उसका कस्टमाइजेशन, जो कि और किसी भी लेंटिक्यूल में आज भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में हो भी पाएगा, बिकॉज जो ये क्यू वैल्यू वाला फैक्टर है ये आपके स्फेरिकल एब्रेशंस को तो करेक्ट कर ही रहा है, आप उसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं. इनफैक्ट आई थिंक मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि हम इसको पुश करें तो शायद एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ हम कुछ ज़्यादा जैसे 35 या उस एज वाले लोगों को एक डेप्थ ऑफ फोकस भी देने लगे, एक ईडॉफ जैसी क्यू वैल्यू को चेंज करने से, जो कि हमें फ्रीडम और किसी भी लेंटिक्यूल सर्जरी में नहीं मिलती. बट मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि मैंने ना ऐसे सर्जन्स देखे हैं जिन्होंने लेंटिक्यूल सर्जरी स्टार्ट करी और फिर उसके बाद छोड़ दी और ये बोला कि ये लेंटिक्यूल सर्जरी तो बेकार है और सबका फ्लैप करो. तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? इसका बहुत सिंपल आंसर है. तुम कोई भी सर्जरी करो, सर्जरी होने के बाद उस पेशेंट को अच्छा देखना है, ये हमारा आउटकम है. अब वो सर्जन्स को ऑपरेशन लेंटिक्यूल करने के बाद अगर वो पेशेंट को उन्हें एक्सपेक्टेड जैसे था अगर विजन नहीं मिला और वो सोच में पड़ गए तो सब तो मैंने ठीक करा, सर्जरी भी ठीक करी, और अगर वो आउटकम उन्हें नहीं मिल रहा हो तो वो रुक जाते हैं. बट ये नहीं देख रहे कि वो क्यों वैसे हुआ. तो एक तो हमने मशीन के बारे में कह दिया है कि वो आप ठीक से अपडेट नहीं करोगे तो वो उस जैसे चलनी है वैसे नहीं चलेगी. बट दूसरी चीज़ जो कि क्लियर सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है इज द सर्जिकल इंटरवेंशन और द सर्जिकल स्किल. आई थिंक सारे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में क्लियर और फेकिक लेंस, ये दो लेंस सर्जरीज ऐसे हैं जिसमें सर्जन का स्किल आउटकम को डिराइव करता है. तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि मैंने भी यही फैक्टर नोटिस करा कि जो सर्जन्स इतना ज़्यादा मेटिकुलसली डिटेल में नहीं जाते या रिफ्रैक्टिव सर्जरी को थरोली प्रैक्टिस नहीं करते, वो लोग लेंटिक्यूल सर्जरी के रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते उतना अच्छे से. ये मेरे बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस में मैंने देखा है. उसका रीज़न मुझे यही लगता है कि इसमें सर्जन स्किल और लर्निंग कर्व थोड़ा लंबा है,
और इसलिए जो अच्छे सर्जन नहीं है, मतलब जिनके सर्जिकल स्किल उतने अच्छे नहीं है, वो लोग ये फील करते हैं कि यार लेसिक में मुझे मेहनत कम करनी पड़ रही थी, अपने हाथ से मशीन ही काम कर दे रही थी और वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मैं पेशेंट को ये बात ना समझा कर कि तुम्हारे को ड्राई आई है और ये सब है, मैं वो सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ और पेशेंट को ये कहता हूँ कि कल से तुझे दिखने लग जाएगा 6/6, इसलिए तू ये करा ले। लेकिन अगर आप ये सर्जिकल स्किल को होन करें, बेटर करें, तो लेंटिक्यूल सर्जरी आपके पेशेंट को ज़्यादा सेफ्टी देती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए देती है, ड्राई आई से बचाती है, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। इट इज़ जस्ट कि आप एक सर्जिकल स्किल की लैक की वजह से या उस इंटेंट की कमी की वजह से आप लेंटिक्यूल सर्जरी को खराब बोल देते हैं और उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। यही मेरा भी मानना रहा है। एंड आपने फेकिक लेंस के बारे में कहा तो आई एग्री विद यू। हालांकि मतलब क्योंकि हम लोग अच्छे सर्जन से ट्रेन हुए हैं, अच्छे सर्जन्स को देखा है, अपने सीनियर्स अच्छे सर्जन्स हैं, तो हम लोगों को लगता है कि यार ये तो रिजल्ट तो ऐसे ही आना चाहिए। पर मैंने भी देखा है कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ICL या जो IPCL फेकिक लेंस हम लोग करते हैं, उसके अंदर भी सर्जन की स्किल उसको प्लेस करने की, उसको बिना इन्फ्लेमेशन, बिना आँख के बाकी स्ट्रक्चर्स को डैमेज करने की स्किल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेक अवे आता है कि लेसिक के कंपैरिजन में लेंटिक्यूल सर्जरी या क्लियर जो है वो सर्जन डिपेंडेंट सर्जरी है। और सर्जन डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि सर्जन को लेंटिक्यूल सेपरेट करके रिमूव करना होता है। क्लियर में वो मशीन ने आपके लिए आसान जरूर कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। आपको ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ भी कि डिफरेंट प्लेन्स में एंटर हो गए या बट वो इनिशियली जो लर्निंग कर्व था when I was doing as in my residency वो बहुत अलग था और अब हम अलग तरीके से करते हैं। Exactly. जैसे कि तुमने कहा there are many surgeons जो कि अब भी उस बैंड वैगन पे चढ़े हैं, अब भी वो उनका लर्निंग कर्व शुरू हुआ है एंड इट इज़ नॉट एन ईजी लर्निंग कर्व टू अचीव एंड कंप्लीट। तो वो जो कि डिसेक्शन है, देयर इज डेफिनेटली फ्यू issues that can go wrong in the initial few cases और that's what makes or breaks। so कितना समय हमने लिया वो करने को, कितना समय वो निकालने में। of course वो planes तो बना के रख दिए हैं मशीन ने, बट हम उसको किस तरह से निकाल रहे हैं। करेक्ट। तो आई थिंक इसीलिए हर कोई लेसिक करता है लेकिन हर कोई लेंटिक्यूल नहीं कर रहा। So, Dr. Tanvi, we've navigated a lot of the major applications that we commonly use in the Zimmer Z8, but it's a very versatile machine. Yes. As you must have seen, it has 20 applications. It just doesn't make coffee. Everything else it does. That's a very nice way to put it. I think it's one of the first lines that I've heard. I'm going to use it later. Yes. So. It just doesn't make coffee, it does everything else. So what is the other kind of application that you've used and found it to be very useful in your practice? So we get a lot of different cataract situations, as in we have the subluxated cataracts, we have complicated cataracts. So it's not something a different application that I have used, but I just wanted to reinforce and say that we've done rexis. We have decentered the rexis, made it so that it centers it after we have secured the back to the sclera. We have put hooks onto the rexis, we have used segments on it, we have done a PPC where there's a posterior break, and then we have kind of targeted the cuts in the safety zone, and we have completed these cases very, very well. There are other variations that or other the other modules of the femtosecond laser, which is for the pterygium, which seems to be very exciting and upcoming. I haven't personally used it, but that's something that I'm keen to start using. So do you also do like ring segments or things like that? You don't do it in your practice. You have other surgeons who are doing it. Not yet, but we are hoping, because our cornea surgeon may be interested to do that. Okay. But as of now, I'm only refractive and cataract. Okay. So what would be your top 3 giveaway messages to the patients who are aspiring to undergo refractive surgery? What would be the 3 important advantages that clear would give them compared to any other procedure?
So, a refractive surgery, when you plan to, for any patient who wants to undergo refractive surgery, I think you must be able to trust the doctor that you are going to. You should let that doctor take a decision for you rather than you coming up and saying that I want so and so procedure, whatever you may have looked at online or otherwise. You need to trust the doctor enough to say that yes, that doctor has looked at your eye, felt that yes, this procedure suits you better. And the reason to go for a femtosecond laser platform over any others would be that there is definitely that precision involved. We've looked at your corneas, we have scanned them, taken a cross section, looked at each and every micron level, and then seen that will a flap be better suited for you? Do we need to take care of your aberrations? Or, do you have dry eye? We've looked at your epithelium. And then if we've chosen a lenticule procedure for you, know it and trust it that, you're going to get a good post-operative outcome. So I think that the reason when we choose a lenticule over a femtosecond LASIK would be mainly that it's a minimally invasive procedure. We've just gone in through a 3 millimeter incision. The next day, there is no fear for the patient ki haath lag bhi jaye to, if he touches his eye, Right. it's not going to cause him any problems. He's going to be up and about doing his daily routine right from day 2. So there are a lot of advantages over one procedure over the other, but definitely choose a femtosecond laser platform. So, in fact, I'll end with this incident that I want to share with everybody. I had a patient who got operated for clear in February, and in March, I had already told him after 1 week that you can do daily activities as normally as you want to do them, which is basically what Correct. we tell almost everybody. So the guy went ahead and played Holi. तो वो गया, उसने जाके मतलब फरवरी में सर्जरी हुआ 25 फरवरी के आसपास, और 10-15 दिन बाद होली खेल लिया. होली खेलने में आँख में रंग चला गया, और रंग से पूरा उसका कॉर्निया जो है वो अब्रेड हो गया, मतलब केमिकल इंजरी जैसा हो My गया. God. वो मेरे पास आया परेशान कि सर ये हो गया वो गया. मैंने जैसे ही उसके डिस्चार्ज पे देखा कि ये क्लियर हुआ है, मैं उसको बोला, मैंने कहा तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, तुम पूरे ठीक हो जाओगे, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे. एंड मतलब लो एंड बिहोल्ड 10 दिन में वो बिल्कुल वापस 6/6 परफेक्ट. बिकॉज फ्लैप ना होने की ये एडवांटेजेस जो हैं, True. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. True. एंड आई थिंक ये एक चीज़ है जो हम लोगों को समझनी चाहिए. एंड आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच एवरीबडी शुड रिमेंबर, दैट these kind of chemical injuries that happen on your eye after 1 week or after 20 days of a lenticule surgery will not damage your eye to any extent more than an untouched or an eye that has not undergone a laser procedure. And that is the biggest advantage or the biggest safety net that you have, having undergone a lenticule surgery compared to any other procedure. Yeah, I just want to add that may it be cataract or may it be refractive surgery, when you choose something where you can image the place that you're going to work with or work at, and then navigate that area with the laser, target it to that area, why would you not want to use that kind of technology where you can actually see the tissue you're going to work at, target it, and then do, versus something where you're going in blindly and just hoping that you do it at 100 microns level and you expect that it happens. So when we are in a place where technology can let us hit the bullseye, might Why as not? well use it. Correct. Thank you, Dr. Tanvi. Thank It was you, Ru. great talking at length with you about all these things. I think our audiences will benefit from it a lot, and we'll be happy to answer any more questions. If you have, please put them in the comment section and we'll try and answer them as much as we can. Thanks a lot, everyone. Thank you.